स्टार्ट करते हैं. Tell me something about yourself. I am C. Komalka Rajawat, born and brought up in Jaipur, Rajasthan. Beginning with my academics, I have done my schooling from CPSE board by scoring 91% in high school. During my CA journey, I have done my articleship from CA Mehta and Company, which is a mid-size firm, where I got more exposure towards stat audit and concurrent audit, and limited exposure toward other audits. I performed their walkthroughs, analytical procedures, taste of controls, taste of details, and also engaged in the reporting process. Along with this, I have pursued my graduation from Maheshwari College of Commerce and Arts. I am a kind of person who is self-motivated, have the positive attitude, and a fast learner too. That's all about me. Thank you so much. फास्ट क्यों भागते हैं इतना? आराम से. ठीक है. ठीक. ठीक है. What is मेरा मॉक चल walkthrough? रहा है, धीरे बोलना. What is walkthrough? Walkthrough means procedure to test transaction, step-by-step testing of transaction, which are recorded in accounting system from starting to end. Control testing. Control testing, testing of controls which are there in the organization. It includes design and testing of design and implementation of control, and testing of operating effectiveness of controls too. What do we do in design implementation? Design and implementation, we check whether controls are properly designed or not, and if they are properly designed, whether they are implemented in the organization or not. And for this, What is the we procedure take out here? 2-3 samples. For this, we take 2-3 samples, and then we check whether whether controls are properly designed and implemented. And what do we do in this test of operating effectiveness? In operating for testing operating effectiveness of controls, we take the more samples, like 40 to 50 samples, and then test whether controls are properly operating properly effectively or not. Okay. In the resume, you have written inventory testing, physical inventory count, ABC analysis, cut-off testing, and all. Okay. Handle preparation of report on good, damage, and expired stocks. Kindly highlight on this. Okay. Sir, I did engaged in stock audit, and during that period, I engaged in inventory testing, that is physical verification of inventory we did, and sheet to floor and floor to sheet procedure I engaged in, that is matching of inventory which was there at warehouse, matching that with inventory recorded in register, and then for doing What the is seat to floor? Seat to floor mean matching of inventory from recorded in register to the physical inventory. What is the discrepancy you found during the stock audits? During yes, discrepancy I found was, one of the discrepancy was related to the internal control, that is camera was there in the warehouse, but that was not working. So, and other discrepancy was some of the inventories were in the damaged conditions, and slow moving stock I also found, which was not selling the rapidly, and company was still valuing them on the normal price, which was showing the overvaluation of inventory. And how do you value inventory? How do you value inventory? Inventory is normally valued as cost or NRV, whichever is less. Excellent. But if finished goods, Okay, how do you do the valuation of inventory? it is valued at cost or NRV, whichever is less. But if finished goods, which are made out of which are made out of particular raw materials, they are being valued at cost, then RM will also be valued at cost. Okay, what you will do the values? How is the valuation of inventory in case of raw materials? Is it always cost or NRV, whichever is lower? No, sir. If the finished good which are being made out of those raw materials, they are selling at below selling price, or they are being valued at cost, then raw material will also be valued at cost. What is rollback and roll forward of inventory?
Yeah, rollback and roll forward, like if we are not able to test the inventory on 31st March, like on the date of end of financial year, and we are testing the we are doing the physical verification or testing of inventory at a later date, that is we are doing on the 10th April, then the provision we will apply is the rollback, that is we will take the inventories on 10 April at the sales to date and deduct purchases from that roll. What is roll forward? Yeah, if we are doing the inventory testing from a date earlier than the last date of financial year, like we are doing this on 21st March and 31st March is the end of financial year, then we will take the inventory as on date of 21st March, add add in that particular inventory the purchases, expected purchases that are we are going to make, and expected sales will be deducted from that. How do you check the going concern? Going concern, yeah, there are going concern is basically principle which shows uh, whether an organization will be able to continue its operations in a foreseeable future or not. And to check the going concern, there are various indicators, that the operating, financial, and external indicators too. Like external indicators, like if the government has the restriction on the particular product that entity is dealing with, then it will affect entity's ability to continue its going concern. And What is the one risk that can impact a going concern? risk in what sense, matlab? What is that one risk that can impact a going concern of an organization? Okay, long-term borrowings of an organization are maturing towards maturity, and organization is not regular in payment of that and does not have any real prospects for the renewal or their repayment. How do the valuation of inventory? Sorry, fixed assets. Valuation of fixed yes, if fixed assets are required to be valued by the registered valuer, You then will note it down should all be the done by. questions, Ritu. जो questions हो रहा है, you will note down all the questions. जितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. Note down. Okay. Also, you will check what answer is saying right or wrong. एक जरूर आ रहा है, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा. तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है ना, एक बार रिपीट करिए. कोमल स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ है. रितु विल नोट डाउन. क्या क्या हो गया अभी तक. म्यूट में हो. हाँ, अविनाश. What are walkthroughs? एक मिनट Yes, sir. रुको. अब आप है ना क्वेश्चंस नोट करते जाएगा. मॉक ले रहा है कोमल का. स्टार्टिंग करो. शुरू हो जाओ. बोलो. What are walkthroughs and what is control testing? वॉक थ्रू लिखो. कंट्रोल टेस्टिंग. How will we value inventory? हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंटरी. What is rollback and roll forward? रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड. What is sheet to floor and floor to sheet? सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट. एक सेकंड. और क्या था. And one was looking to. सर ये तो यही हुआ है अभी. ठीक है. एक सेकंड. ओके, हाउ विल यू डू द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. If एक मिनट fixed रुक assets जाइए. are. एक मिनट रुक जाइए. हाँ, आप एक मिनट रुक जाइए. अविनाश आया, गगनदीप को ले रहा है लाइन. एक बार में हो जाएगा. हाँ. 75080. 2 मिनट दीजिए मेरे को. सर LOE and MRL वाला कहाँ, वो नहीं हुआ. Okay.
LOE भी कुछ होता है? Letter of engagement. अच्छा, Letter of engagement. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. नहीं तो क्या क्या पढ़ लिया आपने आज सुबह से? सर एक फ्रॉड का था शीट, और एक था डिलॉयट यूएसआई 2 करके एक शीट लिखा हुआ था, वो था, और एक ऑडिट एरियाज करके था, वो वाला शीट पढ़े थे। और कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं क्योंकि तो वो भी ऊपर करवा नीचे देगा वो। आप इनका ले लेते हैं मॉक। ठीक है गगनदीप, तुम ना नोट करते जाना जो जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने जो जो क्वेश्चंस किया, क्या क्या किया, वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, वो रोल बैक, रोल फॉरवर्ड, Sheet और to क्या था? floor, floor to sheet. सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट। ठीक है Valuation चलिए। of inventory. चलिए अभी हम कोमल को पूछते जा रहे हैं, सब नोट करते जाएगा। कहीं पे लगे कोमल गलत है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ पर गलत हो। ओके, हाउ डू यू डू द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? Oh, yeah. कोमल। If the valuation is required to be made by the registered valuer, then we'll see whether the same has been made or the not. And for other fixed assets, we will check whether the applicable FRF, that is Ind AS or AS, whatever is applicable to entity, has been followed or the not. And the amount which is capitalized to the fixed asset, should they be capitalized as per the applicable FRF or the not. There are two And methods we'll in also check the there are two appreciation. methods in when you are valuing an inventory. Okay, there are two methods. What are those methods? Two models are followed. Inventory, No, fixed assets. Sorry, fixed assets. Yeah. cost model and revaluation model. Okay, what is cost model? What is revaluation model? Okay, sir. At cost model, we book fixed asset at the cost at which we originally purchased, and for at end of each year, we adjust in that cost depreciation and impairment loss. And for the revaluation model, at the end of each year, we record the inventory, sorry, fixed asset at a revalued amount at fair market value of that asset. Depreciation. Okay, what is the formula of depreciation as per WDV? WDV, so value of asset is a depreciation rate is applied to that value of the asset, and that whatever the depreciation amount is coming, that is deducted from value of asset. Depreciation का formula चाहिए WDV. Anybody? Depreciation formula WDV. लिख लो. Cost of Depreciation. asset into One depreciation rate. one So minus value of scrap asset into value. rate of depreciation. वन, हाँ, One minus वन scrap value माइनस divided by वन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई कुछ होता है WDV, तो डिवाइड बाय ब्रैकेट करके वन कॉस्ट ऑफ डिवाइड बाई एसेट, वन एंड अपॉन दैट इज टू द पावर ऑफ वन अपॉन अंडर द रूट यूजफुल एन। लाइफ। फॉर्मूला पूछ one लेता है by इसको। n. One by n useful. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ। ओके, हाउ हाउ इट इज कंप्यूटेड? डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ So useful life of asset. हाउ इट इज कंप्यूटेड? Useful life of asset is computed on the basis of the period for which asset is going to generate benefits for the organization. Which And schedule yeah, companies is act? in as per schedule 3. 3 3 शेड्यूल 2 ना? Schedule two. शेड्यूल 2 होगा, शेड्यूल 2 होगा, देख लो, मेरे को भी याद Schedule नहीं two है आता। sir. शेड्यूल 2 है, हाँ, शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट? So depreciation is charged on asset due to its use in the organization, normal obsolescence due to normal obsolescence and due to आप लोग passes of क्वेश्चंस time. नोट करते जाओ, क्या क्या नहीं आ रहा है देख लो, क्या आ रहा है वो भी देख लो। जो आ रहा है उसको पढ़ना नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको पढ़ना है, सिंपल है, टाइम बचेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? यस। The depreciation is charged on asset due to obsolescence or due to passage of time and uses of asset in the organization.
And impairment is charged whenever recoverable amount of asset is more than its carrying amount. Like the benefits that organization is going to receive from the asset that are less than the amount at which asset is recorded. Impairment is advanced depreciation. ये भी लिख सकते Yes, हैं. sir. Okay. ठीक है. Impairment is advanced depreciation. What is the difference between depreciation and amortization? Depreciation is charged on intangible assets and amortization is charged on depreciation is charged on tangible assets and amortization is charged on intangible assets. What are the indicators of impairment? Yes, there are internal indicators as well as external indicators of impairment. Internal indicators are that asset is damaged or technical requirement of the organization has changed, and external indicators are government has put ban on that asset, or the new competitor has arisen due to which we are What required is the to formula of change impairment? or carrying amount minus recoverable amount. What is the breakup of recoverable amount? Sir, what is? The breakup of recoverable amount. How do we calculate Recon- recoverable amount? Yes. Okay. Recoverable amount is calculated on the basis of future economic benefit that the asset is going to give. Value in use Anybody? or fair value, whichever is higher. Yes. Whichever is higher, okay. Value in use and value in and recoverable value, whichever is higher. वो लोग आपको जो भी पूछेगा आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते जाएगा, टेंशन नहीं लेने से अगर क्वेश्चन. ठीक है. How do you do the verification of trade receivables? Okay, so to do the verification of trade receivable, first of all, we see we will see invoices, we will see the invoices, underlying documents and agreements with trade receivables to ensure their completeness and accuracy. Then we will do the aging analysis to ensure whether the provision is required to be made for long outstanding entries, and then we'll send the independent external confirmation to the to those trade receivables to ensure their existence and accuracy. If replies to independent external confirmations are not received, then we will perform we will check the subsequent we will check subsequent payments, and if the Payment. subsequent payments have Payment. subsequent confirmations. Confirmation. Sir, ऐसा क्या होगा? Subsequent receipt. Subsequent bank receipt, statement, collection. we will see that. Subsequent collection लिखेगा ना? हाँ Collection सर हुआ वही कि बोला, नहीं हुआ? मतलब सब्सिक्वेंट पेमेंट उन्होंने हमको किया पेमेंट है नहीं अलग किया, हो गया मैंने ना. इसको क्रेडिट नहीं करके बोला। क्रेडिट का केस में पेमेंट लेगा ना. डेटर का हाँ केस में तो मतलब सर कलेक्शन लेगा. उन्होंने हमें पेमेंट किया या नहीं किया वैसे मैंने बोला, लाइक ओके नहीं, सब्सिक्वेंट गलत हो गया. कलेक्शंस लेगा ना. ओके। डेटर में तो कलेक्शन करता है. गलत हो गया ना. एक एक वर्ड गलत होने से गया आपका आंसर. कलेक्शन. डेटर का केस में कलेक्शन, क्रेडिट का केस में पेमेंट. आगे. And if the subsequent receipt has not been made, then we will check proof of delivery. To गलती मत करना. ये कलेक्शन लिख लो. पूछेगा कलेक्शन. हाँ डेटर का सर केस लिख में लिया। कलेक्शन और क्रेडिटर का केस में पेमेंट, सब्सिक्वेंट पेमेंट. बैंक का केस में सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, बीआरएस एंड सब्सिक्वेंट क्लियरेंस. ठीक है, आगे. Then if the subsequent receipt has not been made, then we will check the proof of delivery, whether sales were really made to those trade receivables, and then we will select some of the customers on sample basis and perform test of details for those customers. Do you do sampling in daters? Yes, sir. Confirmation while taking the on what basis your sampling of the data confirmation will be happening? So we can check high value daters can be selected. Daters who are related parties to the organization, those daters can be selected. And also the time, na? How long the daters have not paid the money. According to the data's aging, we can also do the sampling thing. Recomputation of daters. Okay, good. How do you do the cutoff of revenue?
Cutoff procedures basically means whether transactions have been recorded in appropriate accounting period or not. To do the cutoff to perform cutoff procedures for revenue, we will check from underlying documents and from the inventory dispatch register whether the revenue is recorded in proper period or the not. We will also check the reversal entries for the month of April to check whether the sales return have actually occurred or the organization merely pass entries to inflate sales for the month of March. Anything else? And We'll we may check in also revenue check cutoff. we may also check the we may also check the Incoterms which define responsibilities of buyers and the sellers in a in a transaction, and freight bills, GRN, and You not use the transportation. right words in this. You will check the last 10 to 15 invoices before March and No, first last 15 10 10 to 15 invoices after invoices. March, and then you will check with the you will check those invoices with the e-way bill, freight bill, Incoterms. Then those things will come. यहाँ पर गलती हो रहा है, समझे? ये देखिए, आप इनवॉइसेस लेगा मार्च का एंड अप्रैल का बिफोर द मार्च 10 to 15 invoices based on the ROMO and 10 15 to 10 invoices. ये लाइन बोलेगी, लिखिए ये चीज अभी लिखिए, गलती हाँ, करेंगे फिर से कट ऑफ में. नोट कर लिया। एंड सेल्स रिटर्न आप चेक करेगा अप्रैल में देखने के लिए जेन्युइन सेल्स रिटर्न है कि ऐसी फेक सेल्स हुआ था मार्च में और सेल्स रिटर्न कर दिया, तो वो आप सेल्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि सेल्स रिटर्न का रीजन क्या था जो हुआ है. ठीक है, गुड. How do you check what are the procedures you will, what is the difference between vouching and verification? Vouching is vouching is basically like test of details where underlying documents are where the registers and trial balance ledger journals are matched from the underlying documents to check their date, quantity, amount, etc. And in verification, physical verification is done to ensure the existence. गलत. क्या होगा इसका आंसर रितु? So even I don't know. ये सब I don't know how वाउचिंग to एंड say this. वेरिफिकेशन क्लास 12 का आंसर नहीं है कि आईपीसीसी में ये सब होता था. क्या होगा गगनदीप, अविनाश? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? आप लोग को डिफिकल्ट आंसर पता है, पर इजी इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है. यही सब भी पूछ लेते हैं. वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन क्या डिफरेंस होता है बताओ? आर्टिकल बता देगा होता है ये सब चीज, बताओ. वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, वाउचिंग में सर हम देखते हैं कि रिसीट्स एंड उनकी चेक करते हैं, इनवॉइसेस चेक करते हैं कि वो बैलेंसेस ठीक के है. लिए वाउचिंग. बोलो अविनाश. वेरिफिकेशन सर वेरिफिकेशन हम ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं और वाउचिंग हम बेसिकली बैलेंसेस करते हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है. उल्टा बोल दिया तुमने. हमको बस यही स्टैंडर्ड हो गया आजकल का, भाई समझ नहीं आ रहा है. वाउचिंग होता है पीएनएल आइटम्स का, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स का P&L items. वाउचिंग होता है, यस सर. और वेरिफिकेशन होता है बैलेंस शीट आइटम्स का. बहुत खराब स्टैंडर्ड चल रहा है सीए का. आईपीसीसी का टाइम में पढ़ता था ये सब चीज. वाउचिंग होता है, आर्टिकल्स में वाउचिंग ही तो कराता है, पीएनएल आइटम का, सेल्स का, परचेजेस का, कोई भी जिसका वाउचिंग करता है. वेरिफिकेशन होता है बैलेंसेस का, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट बैलेंस, वो बैलेंस, वो बैलेंस. ठीक है, हो गया. डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया. ठीक, गुड. ओके, व्हाट आर द रीसेंट ऑडिट रिपोर्ट अमेंडमेंट्स? लिख लीजिए वाउचिंग वेरिफिकेशन. ठीक है, एक आपको एसडीसी में पूछा वाउचिंग वेरिफिकेशन, आंसर नहीं बोले आपका कहानी वहां पर क्लोज हो गया. समझ रहे हैं ना? एक क्वेश्चन के कारण कहानी क्लोज हो जाएगा आपका. ज्यादा पढ़ लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन नहीं करके गए, ओके, आपका टिकट क्लोज. ठीक है, ओके. ठीक है, क्या क्वेश्चन था? ऑडिट रिपोर्ट अमेंडमेंट्स. सर ऑडिट रिपोर्ट अमेंडमेंट्स नहीं पता, कार्य एंड स्केड्यूल ठीक है पता. The audit report amendment one was that whether the company has declared any dividend, and if the dividend has been declared as per Dividend under section section? 123 of the Section under section 123. 123 of the Companies Act, 120. and second amendment that if the company is complying any if the company is that was related to accounting software, that the company is using any accounting software Audit trail. and Audit trail. whether Audit trail or not. and This is your whether audit that trail. exists Company is audit having a trail as well. policy of audit trail. हाँ ठीक है, हाँ तो एक डिविडेंड एक ऑडिट ट्रेल है, लिख लो. ठीक है, मॉक लेने से पता चल जाता है कहाँ पर क्या गलती हो रहा है. अब सर क्या याद बार क्या बार भूल पढ़ना गए. नहीं है.
है अभी इन्होंने एक बोला ऑडिट तो ट्रेल, याद आया कि हाँ सॉफ्टवेयर। वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया, एक वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया, और एक तो क्या हो गया, ऑडिट ट्रेल हो गया। ठीक है, ऑडिट। ठीक है। अब आपको खाली पता चल गया आपको क्या आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता उसको कंप्लीट करिए, हो गया आपका काम खत्म, वही चीज है। चलिए, ये तो क्या होता है ना, हम लोग एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, टाइम पास हो जाता है, समझे, वही चीज है। व्हाट आर कारो अमेंडमेंट्स, बताइए कोमल। Caro amendments, one amendment is related to जो चीज आप लोग internal. आता है, आप लोग को पता चल गया क्या आता है, जैसे ये चीज आ रहा है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो चीज नहीं आता पता है ये नहीं आता है उसमें टाइम लगेगा, ऐसे करके बोलो। चलो, क्या है कारो अमेंडमेंट, बोलिए फटाफट। The one amendment is related to the internal controls, whether organization is having the proper internal controls which are commensurate with the size and nature of organization. One is related to cash, whether the auditor is required to report about cash losses in Caro Whether the requirements business and has incurred cash losses during the year or cash not. losses during the year, Whether they have whether incurred the the cash losses. ठीक है, whether बोलो the business next. has incurred cash losses during the year or not, and if the whether in What is case of cash loss? ongoing What is cash loss? so which is comes from operating in cash flow statement comes from operating activities. हाँ, ऑपरेटिंग कैश Cash लॉस flow जो from होता है ना, operating कैसे activities. Yes. ब्रेकअप, क्या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, कैश लॉस का फॉर्मूला, हाउ यू कैलकुलेट कैश लॉस? So net profit plus profit plus all the non-cash नेट items, लॉस होगा non-cash ना, expenditure. कैश लॉस होगा तो नेट लॉस होगा, नेट लॉस बोलो। Sorry, net loss in which we will adjust all the non-cash expenses and incomes and then the changes in working capital. एड बैक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐसे ऐसे करके बोल Yes, देना sir, कुछ। all the ठीक है, non-cash income and expense. ठीक है, आगे, ओके नेक्स्ट पॉइंट बोलो सारा। One amendment is relating to the CSR reporting in case of ongoing project, whether the organization has transferred an unspent CSR amount within 30 days from the end of financial year, and in case of other than ongoing projects within 6 months from the end of financial year, and auditor is also required to report as per clause 21 of Caro. If there is any the adverse comments in the audit report of subsidiary company, and auditor is also required to report on material The uncertainty. subsidiary company that it will go to the parent company. It has to be reported in the parent company. बोला in है। parent company's audit. Yes, sir. And और auditor is also required to report about whether material uncertainty exists as to entity's ability to continue as going concern, and if there was the resignation of previous auditor, then auditor is also required to report on that. okay, बताओ deferred tax asset. Deferred, it is not an asset it is not an asset in real terms. It is just an accounting adjustment which is recorded due to timing difference between due to timing difference between tax amount that is recorded in our books of accounts and ये ठीक से tax करना base. पड़ेगा तुमको। रितु बोलो deferred tax asset, इजी है एकदम, बोलो। So deferred tax तुम asset लिख रहे हैं ना, arise in the situation. तुम लिख रहे हैं जो बोला, Deferred tax जो asset. चीज नहीं आता लिख रहा है ना, तो कोमल हाँ लिख रहा है सर, आप, जो चीज नहीं आता है हाँ हाँ आप लोग लिख रहे हैं हाँ ना, क्या हाँ क्या क्वेश्चन एकदम अच्छा से Yes, नहीं sir. आता है, वो आज कंप्लीट कर लीजिएगा 24 घंटा 48 घंटा में, लेट नहीं करना एकदम भी, ठीक है, एकदम लेट नहीं करना है। वाउचिंग वेरिफिकेशन और जो जो क्वेश्चन था ना सब लिख लीजिए, ठीक है, सर डेफर्ड टैक्स एसिड भी लिखिए। हाँ सर हाँ स्टार्टिंग वाले बोलिए, बता दोगे, स्टार्टिंग वाले। बता देगी लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोमल बता देगी। आप तो स्टार्टिंग से आया था, ओ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, वो एक्सेल शीट में सब रहेगा, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक। सर क्या पता, सर एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट मैं पूछ सकता हूँ? सर मैंने आज ही ज्वाइन करा है तो मेरे को सर पता नहीं है कि नहीं अभी नहीं क्या तुम चल आज ही रहा है के, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, जान बुझ कर लो, हाँ अच्छा कोई। अच्छा। अच्छा, जो है क्वेश्चन नोट करते जाओ। अभी डेफर टैक्स एसेट बताओ रितु क्या होता है, आप लोग बस देख रहे हो आपका नॉलेज कहाँ पर है। आई एम जस्ट वांटेड टू हैव अ चेक, हम लोग रियलिटी चेक है, कितना आता है कितना नहीं आता है, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, इतना तो आता है भाई अपने, ये इतना नहीं आता है, बस ये आता है ये नहीं आता है, जो नहीं आता है पढ़ना है बस, हो गया। बोलिए डेफर टैक्स एसेट, बेफालतू का टेंशन लेते रहते हैं लोग, इसलिए डेफर टैक्स एसेट बोलिए। So deferred tax asset arise in a situation where tax base is more than the carrying amount. So the difference. So the difference amount. So with the difference amount, we multiply the tax rate of the current tax rate, and
That is the deferred tax asset. I don't It know is the the temporary accurate difference. Deductible taxable Deferred tax difference. arises due to temporary Deductible temporary differences Temporary between timing the difference. income as per the books and the income as per the income tax returns. यही होगा, देख लेना. future benefit हाँ? as per books and future benefit as per taxation. हाँ वही है ना, इनकम एज पर बुक्स, इनकम एज पर रिटर्न्स, इट इज हैपनिंग वी डू दैट. ये पूछता है. डिफर्ड टैक्स एसेट का एग्जांपल्स बताइए कोमल. Sir, like a planted machinery is recorded in our books of accounts at rupees 100, and if the tax base of that is rupees 150, then here we are having the recoverable tax difference of rupees 50, and applying on that current tax rate, तो आपको we will get प्रोसेस our नहीं पूछा है. deferred आई tax जस्ट वांट एग्जांपल्स ऑफ डिफर्ड टैक्स. deferred tax asset example, prepaid expenses हाँ प्रीपेड and एक्सपेंस. so prepaid expense and excess depreciation charged in books of accounts. डेप्रिसिएशन से क्या होता है? Unrealized profit. डिफर्ड Impairment टैक्स loss. लायबिलिटी. और Unrealized profit. Unrealized profit. प्रॉफिट कहाँ? प्रॉफिट से कहाँ होता है? लॉस से होता है डिफर्ड टैक्स एसेट. प्रॉफिट से कहाँ से होगा? कुछ भी. Impairment, sir, impairment loss. कैरी फॉरवर्ड ऑफ Depreciation, लॉसेस. impairment loss लॉसेस on से the आपका लॉसेस से डिफर्ड टैक्स एसेट हाँ. होता है. सेक्शन 43B, सेक्शन 43B आइटम से होता Preliminary है. expenses. अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5 साल होता है एज पर इनकम टैक्स है. बुक्स में अभी हाथों हाथ लेना पड़ता है, कुछ ऐसा है तो उसके कारण होता है. तो लिख लो अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सेक्शन 43B, जो म्युनिसिपल टैक्स बोनस होता है पेमेंट बेसिस में जो होता है, सेक्शन 43B बोलता है वो. और डेप्रिसिएशन से होता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से होता है डिफर्ड टैक्स एसेट. ठीक है, दिस यू शुड नो वेरी वेल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफर्ड टैक्स. ठीक है, डिफर्ड टैक्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है कि suppose there is a concept called virtual certainty in deferred tax. What is that? So we recognize deferred tax asset only in the situation organization is having foreseeable if organization is foreseeing future profits in the future, like whether the organization will be able to reverse that DTA that it is recording or not. ऐसे मत Whether बोलिए आप. पहले whether suppose the business organization is is going to incurring have the losses. profits again. ऐसे बोलो, suppose the business has having recently is running under losses, then if it is virtually certain that the business will have foreseeable future profit in the future, then deferred tax asset will be created, else it will not be created. अभी लॉस चल रहा है पर फ्यूचर में प्रॉफिट होने का चांसेस है, तब वर्चुअली सर्टन है. कैसे पता चलता है वर्चुअली सर्टन? क्या चेक करेगा, ही पूछ लेता है कोई कोई. तो आप लोग उसको मैनेजमेंट से फोरकास्टेड बैलेंस शीट पीएनएल मांगेगा, उसका प्रोजेक्शंस देखेगा फ्यूचर का, रेवेन्यू कैसे कमाएगा, तो मैनेजमेंट का रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेगा. तो आप लोग चेक करता है प्रोजेक्टेड जो भी बैलेंस शीट फाइनेंस होता है ना, वो सब चीज देख के नोट्स अकाउंट वगैरह, वो भी एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट पीएनएल. ठीक है, गुड. ठीक है, आप लोग सेम लिंक में वापस आ जाइए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. ठीक है, कम इनटू द सेम लिंक. और जो जो क्वेश्चन है ना, सारा आज कंप्लीट चाहिए. 100% इंटरव्यू क्रैक करेगा, 101% हम आपको लिख के दे रहे हैं. ठीक है, बस जो जो है नहीं कराया बस करना है उसको. ठीक है, ओके. आप अच्छा किया परफॉर्मेंस, तो आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस आया ना थोड़ा क्या. ठीक है, आइए सेम लिंक में आ जाइए सब ना.